दिन के बज रहे हैं 4:30। मॉर्निंग में हमारा प्लान कुछ भी नहीं था। वी हैड अ चिलिंग आउट प्लान। सो इन द मॉर्निंग वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट, फिर वी एक्सप्लोर्ड आवर रिसॉर्ट, वी एक्सप्लोर्ड दी अगोंडा एरिया, और उसके बाद फिर हम होटल में चिल ही कर रहे थे। नाउ वी आर सेटिंग आउट फॉर कैपे डी रामा, और वहाँ से हमारा प्लान है सनसेट देखने का। सो वी आर सेटिंग आउट नाउ। These beautiful views are on our way to Capo De Rama from Agonda. As you can see, South Goa is in general very green due to the heavy vegetation, and the path is really very scenic due to the hills by the sea. South Goa is beautiful, isn't it? We are already enjoying the views. Aren't you too enjoying with us? Let us know in the comments below. सो नाउ वी हैव रीच द कैपो डे रामा फोर्ट। मेरे पीछे ये जो है वो फोर्ट का वॉल है, और अगोंडा से यहाँ आने में हमें नियर अबाउट 45 मिनट्स लगे हैं। The Capo De Rama fort was originally built by Shivaji Maharaj in 1679 and was known as Kalhar Fort then. It was conquered by Portuguese in 1760s and was renamed as Capo De Rama. ये माना जाता है कि श्री राम और सीता जी अपने वनवास के समय यहाँ पर रहे थे, और उन्हीं के लिए इस फोर्ट का नाम कैपो डी रमा फोर्ट रखा गया। फोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर आपके देखने के लिए 3 चीजें हैं। पहला, ये छोटा सा कैथोलिक चर्च। दूसरा, द पेबल्स बीच, जिसमें जाने के लिए आपको फोर्ट से ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा। इट इज़ अ स्मॉल ट्रैक ऑफ अराउंड 15 मिनट्स इफ यू आर अ फास्ट वॉकर। पेबल्स बीच में जाने के लिए रास्ता सिर्फ और सिर्फ फोर्ट के अंदर से है, और किसी भी जगह से आप पेबल्स बीच पर नहीं जा सकते। एंड द थर्ड पॉइंट इज द व्यू पॉइंट, द सनसेट व्यू पॉइंट, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। सो ये हम पहुंच चुके हैं बीच में, एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बीचेस ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर आप यहाँ मेरे पीछे दिखेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर कोई सैंड नहीं है। इट्स अ कम्प्लीटली पेबल्स बीच, देयर इज़ नो सैंड हियर। सेकेंडली, द एंटायर बीच, इट्स यू कैन सी इट्स अ क्लोज्ड बीच। इसको आप सिर्फ इस फोर्ट के अंदर से ही आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एंड लेट मी शो यू दिस वे। सो
दूर तक कोई भी लैंड नहीं है, ओनली द हिल्स and some rocks and pebbles in between. It's a really beautiful place. और ये है द थर्ड पॉइंट, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कैबो डी रमा फोर्ट। और यहाँ से आप पूरा व्यू कैबो डी रमा एरिया का देख सकते हो। So now we are at the viewpoint of the Capo De Rama. यहाँ से पूरा जो व्यू पॉइंट है वहाँ दूर दूर तक सिर्फ समंदर दिखता है एंड यू कैन एक्चुअली सी द सनसेट हियर। After the amazing sunset view, we are now heading towards one of the most rated and one of the most preferred location for seafood, that is the Fisherman's Wharf at Cavelossim. We are now at the Fisherman's Wharf. This is in Cavelossim area. We wanted to seal the day with amazing dinner as it was our third anniversary. However, according to us, the ambience was great, the view to the backwaters was amazing, and the food tasted delicious, only it was more on the pricey end, which you can find in other restaurants as well in Goa. So that was our second day in Goa. Please like and subscribe to our channel and do let us know on the comments below if you liked our video. We will be coming up with our next episode of the South Goa series to show you the beach hopping of South Goa.
Till then, stay tuned with us. Bye bye.